हेलो फ्रेंड्स, ये रियल एनालिसिस लेक्चर का थर्ड लेक्चर है। इसमें बेसिकली हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफाइनिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट x and y are the two sets, then their Cartesian product is defined by x cross y, the set of all elements x comma y is the set of all element of x comma y, where x is belongs to the set x and y belongs to the set y. So this is basically हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और दो सेट्स का एक सेट होता है जिसमें सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं। और जहाँ जिस इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट एक्स से आता है और तो इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट द सेट वाई में से आता है। सो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो मैं नोट करके लिख देता हूँ कि फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट order of element are important, but for set need not be, for the set is not important. It is not why, because अगर आपके पास कोई सेट x कोमा y है, कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट x कोमा y है, वो y कोमा x के इक्वल होगा। यहाँ पे ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता है। चाहे तो आप x को स्टार्टिंग में रख सकते हैं और y और x को सेकंड पोजीशन पे रख सकते हैं। बट फॉर द ऑर्डर्ड पेयर द सेट ऑफ for the ordered pair x comma y is completely different from the ordered pair y comma x. They are both different things. So हम एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं टू टाइम्स, तो बेसिकली ये क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर और एंड वाई बिलोंग्स टू आर। और इसको इस बेसिकली इस सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से। जितनी कॉपीज होंगी आर की, जितनी बार आर प्रोडक्ट होता है उतनी उतनी बार उसको हम ऊपर पावर में लिख देते हैं। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली हम एन डायमेंशन ये बेसिकली टू डायमेंशनल, इसको टू डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। सिमिलरली एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, आर क्रॉस आर, वेयर आर is multiply n times।
और इसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं, इसमें बेसिकली n टपल्स एलिमेंट आते हैं, x1 x2 so xn, where each xi belongs to R, I from 1 to n। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन हमने किया है। नाउ वी डिफाइन द फंक्शन, नाउ वी डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। Let x and y are the two sets then we say that the function f from x to y which is denoted by f from x to y is a rule that associate each function, each element x belongs to x to a single element y belongs to y। सो बेसिकली इसका मतलब क्या क्या होता है कि ये फंक्शन जो होता है बेसिकली एक रूल है जो एक सेट x के हर एक एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट देता है। सो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक तरह से एक मशीन है, फंक्शन बेसिकली एक मशीन है जो हर इनपुट वैल्यू के लिए हर एक इनपुट वैल्यू के लिए एक आउटपुट, यहाँ पे अगर इनपुट को x नोट करते हैं तो अगर इस फंक्शन में इस इनपुट वैल्यू को डाला जाता है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देता है, इस आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। सो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो फंक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक सबसेट होता है of the Cartesian product of the sets x cross y, because or we can say that the function f from x to y is a subset, as a subset f of the product x cross y। so basically ये x cross y कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। so
यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक x का एक एलिमेंट है, अगर कोई कैपिटल X का कोई एक स्मॉल एलिमेंट x है, तो हमें यहाँ पे इसके corresponding देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, ये नोटेशन यूनिक के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू y such that x comma y belongs to f। हर x के corresponding यहाँ पे हमें y में एक यूनिक एलिमेंट y मिलता है, तो हम इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेट को डिफाइन करता हूँ। इस सेट का नाम मैंने ए रखा हुआ है। ए सेट में किस तरह के एलिमेंट है, x, y टाइप के एलिमेंट है, वेयर x बिलोंग करता है 0, 1 में एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। सो ये सेट बेसिकली क्या होता है, ये सबसेट ऑफ, हम देखते हैं ये सेट बेसिकली क्या है, ये सबसेट ऑफ 0, 1 क्रॉस आर का, बिकॉज इसका फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0, 1 से आ रहा है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर पेयर का जो सेट है, ये बेसिकली सबसेट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0, 1 टू आर में। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो ए है ये बेसिकली क्या फंक्शन है फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0, 1 टू, इस सेट को बेसिकली हम एक फंक्शन की तरह भी देख सकते हैं कि ये सेट जो है ये फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0, 1 टू आर। तो जैसे कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट 1 है, तो ये बेसिकली जो सेट, अगर ये हमारे पास एलिमेंट 1 है, तो ये 1 को कहाँ पर भेजेगा, ये 1 को हमें कहाँ पर भेजेगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 10। मीन्स ये जो एलिमेंट है 1 को कहाँ पे मैप करता है, 8 पे मैप करता है। ठीक है, सो 1 को ये यूनिक 8 पे, यूनिक नंबर 8 पे डिफाइन 8 पे मैप करता है। तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, इस सेट को बेसिकली फंक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम ये 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को 1 मैप टू 8 अंडर द मैप अंडर द फंक्शन ए। इसको हम लैंग्वेज में इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 is the pre-image of 8, और हम इसको लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, 8 is the image of 1। इन सभी बातों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। सो अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम सेट x से y के बीच में है, तो इस x को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इस सेट y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और जो इस सेट और हम रेंज को किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेंज भी इसके corresponding हम एक सेट रेंज भी डिफाइन करते हैं। रेंज बेसिकली क्या होता है, रेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, आर ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये डोमेन को किससे डिनोट करते हैं,
डी ऑफ एफ से डिनोट करेंगे हम इस कोर्स में, और कोडोमेन को हम किससे डिनोट करते हैं, सी ओ ऑफ एफ से डिनोट करेंगे हम इस पूरे कोर्स में। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसकी कोडोमेन को हम सी ओ एफ से डिनोट करते हैं, और अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसकी डोमेन को डी एफ से डिनोट करेंगे, और रेंज को हम आर एफ से डिनोट करेंगे। तो आर एफ बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं वाई, बेसिक वाई एलिमेंट्स होते हैं जो वाई सेट के होंगे, फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए एक्स belongs to x such that y is the image of x। तो बेसिकली ये क्या है, जस्ट एक इमेज सेट का कलेक्शन है। बेसिकली रेंज क्या है कि रेंज इज द, हम रफली बोल सकते हैं, हम ये रफली बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो एक इमेज सेट का कलेक्शन है। अब ये इमेज सेट का कलेक्शन कोड, पूरी कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है या फिर ये सबसेट भी हो सकता है। सो इट मे बी पॉसिबल दैट RF इज द सबसेट, इसके इक्वल भी हो सकता है, और ये इसका CO कोडोमेन की या इसकी इक्वल भी हो सकता है। सो इफ RF equal to CO of F, then we say that the function F is onto or surjective। तो we can, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन onto है, कोई फंक्शन onto है, इसका मतलब क्या होता है कि for all y belongs to y, then there exists a x belongs to x such that y is the image of x। Now if F is a mapping from the set x to y, then if x maps to y belongs to y under F, then we use the notation fx is equal to y। तो fx is equal to y का मीन्स क्या होता है, fx is equal to y का मीन्स ये होता है कि अंडर द मैप f द एलिमेंट x मैप टू y। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे x और y दो सेट्स हैं, तो अगर कोई एलिमेंट x है तो वो अंडर द फंक्शन f दिस एलिमेंट x मैप करता है एलिमेंट y पे। Now we define the injective functions। injective functions क्या होते हैं, so a function is said to be one injective, और इसको क्या बोलते हैं, one to one। a function is said to be one to one or injective if and only if fx1 is equal to fx2, it implies x1 is equal to x2, or x1 is equal to x2, it implies fx1 is equal to fx2।
तो इसका मतलब क्या होता है, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ एफ, हर एक रेंज ऑफ एफ के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई दो सेट्स एक्स वाई है और वो किस तरह से मैप कर रहा है, वो इस रूल के कुछ रूल डिफाइन किया हुआ है एफ, जो इस एलिमेंट को यहाँ पे मैप करता है और इस एलिमेंट को यहाँ पे मैप करता है, बट और इस एलिमेंट को कहाँ पे मैप कर रहा है, किस पे मैप कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इज दिस फंक्शन इज वन वन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, is sorry, is this function is one one, this function is not one one। क्योंकि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो अलग अलग हैं बट इनकी इमेजेस क्या है, सेम है। और is this function is on to, this function is also not on to because यहाँ पे एक एलिमेंट y में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई इमेज नहीं है, so this function is not one one और also not on to। Now we see the another example. If this situation is happening, if x is this set, is y is this set, and if there are three elements, or each three elements are mapped like this. If this element maps to this, and this element maps to this, and this element maps to this, so this function is one one and also on two, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो x का हर एक एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट y के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे मैप कर रहा है, और y का हर एक एलिमेंट के लिए कोई भी x में हर एक y के हर एक एलिमेंट के लिए x में एक प्री इमेज मिल रही है, सो दिस फंक्शन आल्सो ऑन टू। सो ये कुछ इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे जो जिन एग्जांपल से हम फेमिलियर हैं, जैसे fx is equal to sin x, f maps from R to R। We know that the graph of this function is this। इसका ग्राफ कैसे होता है sin x का, कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है, इसके भी बताएंगे। इसकी ये R है और ये इसकी जो x एक्सिस होती है बेसिकली वो क्या डिनोट करती है, डोमेन को डिनोट करती है, और जो इसकी y एक्सिस होती है जो कि y एक्सिस r है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है, कोडोमेन को डिनोट करती है। तो इस एग्जांपल में डोमेन है वो r है, कोडोमेन है r है, दोनों ही सेम है, बट व्हाट इज द रेंज, रेंज इज द जस्ट दिस। So all the value, because we already know that in elementary classes or in high school classes, the value of sin x is between -1 to 1. So its image set, so its image set, so range of sin x is close interval -1, 1, and its domain is R, and domain of sin x, it is also R, and codomain is also, but now the question is this function is on top, this function is 1 1, ये फंक्शन क्या 1 1 है? आप इसका आंसर देखने के लिए इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में एक बार सोचें कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे y की जो कोडोमेन है उसकी हर एलिमेंट की प्रीमेज नहीं मिल रही है। अगर कोई एलिमेंट ये है, इसकी कोई भी प्रीमेज नहीं मिलेगी। if this is element on the real line,
there is no preimage in the uh, of this element. But if the element is from -1 to 1, then there is the preimage is this. तो इस तरह से हम देख सकते हैं. So any element except the interval close interval -1, there is no preimage. So this function is not onto. Now, is this function is 1 1? This function is also not 1 1, because if we draw the line parallel to x-axis, then we see that the image of this are the same. These two elements, if these two elements are the same, but their preimages are different. So this function is not 1 1. Or mathematically we can also see that we can also prove that if pi and 2 pi both are different, but their images sine pi and sine 2 pi both are the same. So this function is not 1 1 or not 1 2. So if a function is 1 1 and also not 1 2, they known as the bijective function. So if a function is 1 1 and 1 2, then it is known as bijective function. Now we define the inverse map. So हम बेसिकली हमने बहुत सारे एग्जाम्पल एलिमेंट्री क्लासेस में देखे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, log x होता है. So now in the same manner we define the inverse of a function. So let f from x to y is injective map let f from x to y is a injective map, then their inverse f inverse is denoted. F inverse is the map whose domain is range of f and codomain is x. तो इस तरह से हमने इंजेक्टिव फंक्शन को इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया है. नाउ यू सी दैट द फंक्शन, this is the example, you see that the exponential function e की power x from r to open interval 0 to infinity is a for fx is equal to e की power x. This function is 1 1 and 1 2. So and also you see in the elementary classes that the inverse of this function is log of x, which is the whose domain is open interval 0 comma infinity to r. So for fx is equal to log x. So log x is the inverse of e की power x. So log x so in this notation e की power x is the function, the inverse of e की power x is log x.
Now we define some images and inverse images. So given a function f from x to y, and this is just definitions, so and which is useful to create theory, and also this is very useful in proving theorems, or this is very basics in the real analysis. So यहाँ पे अभी हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट नहीं किया, रियल एनालिसिस अभी आगे से स्टार्ट होगी। ये जस्ट बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम आगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे इन सब चीज़ों को। So and f and a be the set of x, then fa is the set of all those elements fx where x belongs to a. Similarly, if b is a subset of y, then we define f inverse b is the set of all x belongs to x such that fx belongs to b. So this is the notation. So this is the notation f inverse b, and the meaning of the f inverse b is the set of all x belongs to x for which fx belongs to the b. इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इस सेट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ सेट ए अंडर द मैप. So map or function both are the synonyms. Map under the map f. और इस सेट्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, इज द प्री image of the set B under the map f. For example, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन है fx is equal to x square. For example, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx is equal to x square. So what is the graph of fx equal to x square? Is this. This is the graph of fx is equal to x square. So now if we have the if we have an interval, so the what is the domain, what is the domain and codomain of this function? If this function f is mapped from R to R, and fx is equal to x square. So this is given. Now if minus 3 comma 2 is the set A which is a subset of R, then what is the image of this set under this map? Now it is clearly see that from the graph, where is the minus 3 comma minus 2, minus 3 and minus 2 are the here, minus 3 is this, minus 2 is this. What is the image of this closed interval under this f? This image of this set is this. You just draw the vertical line which cut the graph, and then draw the horizontal line. So जहाँ पे horizontal line y axis को कट करती है, उसके corresponding जो इंटरवल आता है वो बेसिकली क्या होता है, इस सेट -3, -2 की वो क्या होता है, वो बेसिकली इमेज होता है अंडर द फंक्शन x square. So where is this point is minus, this point is 9, this point is 4. So the image of -3 minus close interval is -3 and -2 is closed interval
4,9. If somebody asks what is the pre-image of the closed interval 4,9, so if somebody asks you what is the pre-image of closed interval 4,9, now the answer is different, because the pre-image of this interval is closed interval -3, -2, and also this portion, because this portion is this, and also इसके corresponding जो भी ये इंटरवल होगा ये भी तो इसकी एक क्या होगी, प्रीमेज होगी, तो बेसिकली ये क्या होगा 2,3, so which is the union of 2,3. तो इस तरह से हम आप देख सकते हो कि हम किस तरह से किसी सेट की इमेज और प्रीमेज निकाल सकते हैं. नाउ हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बोलेंगे. जैसे हर एक सेट के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन होता है, उसको फंक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं. सो एवरी सेट, so for every set A which is a subset of X, then we define a function chi of A from X to R such that chi of A of X is equal to 1, 0 if X belongs to A or if X does not belongs to A. तो इस सेट को बेसिकली क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. इस chi of A is known as characteristic function of A. Now we also define the product of the two characteristic function, the sum or sum and product of two characteristic function. For example, chi A and chi B are the two characteristic function from if chi A and chi B are the two function from X to R, then their sum is denoted by chi of A plus chi of A, which is also a mapping from X to R, which is defined by chi of A plus chi of B is equal to chi of AX plus chi of B of X. Similarly, we define the product. Product is also mapping from X to R. If chi A into chi of B is also mapping from X to R, such that chi of A into chi of B, this mapping is defined like this: chi of A into chi of BX. जिस तरह से हमने प्रोडक्ट और सम ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया है, उसी तरह से हम किसी जनरल फंक्शन के सम और प्रोडक्ट के को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस. फॉर एग्जांपल, इफ f and g are the two functions, if f and g are the two functions from X to R, then f plus g is equal to fx plus gx, and f of g equal to
fx into gx. Now this is known as the product of two functions, and this is known as the sum of two functions. Now if f is a function from x to y and g is a function from y to z, then their composition f of g, their composition is denoted by f of g, f o of g. इसकी कंपोजिशन को किस तरह से डिनोट करते हैं? Which is mathematically defined by f of g of x is equal to f of gx. And fog is a mapping होगी from x से z के बीच में, whose domain is as x and codomain is z. Now अगर आपके पास कोई फंक्शन f फ्रॉम x से y के बीच में है और y is a real number, if y is the set of all real number, then this function known as real valued function. Or if y is a complex number, then this function is known as complex valued function. And throughout this course we study only the real valued functions. So here our codomain is a real number, and if x is the set of all natural number and y is the set of all real number, then this function is known as sequence. For example, f is a mapping from natural number to R such that f of n is equal to -1 to the power n. तो ये बेसिकली एग्जाम्पल होता है सीक्वेंस को। इस कोर्स में हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे मैं आगे कोर्स पढ़ने के लिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। एंड ऑल्सो we see some strange example of the function. For example, if we have a function from f, so अभी तक हमने जितने भी फंक्शन देखे हैं वो बेसिकली वो एनालिटिकली एक्सप्रेस हो चुके हैं, एनालिटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उन फंक्शंस को, but there are some strange examples of the functions which cannot expressed analytically. Or so for example, Dirichlet function. डिरिचलेट ने बेसिकली इस फंक्शन को जो क्रिएट किया था वो फोरियर सीरीज की स्टडी के लिए किया था। डिरिचलेट फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है? f फ्रॉम r से r के बीच में होता है फंक्शन सच दैट f of x इज इक्वल टू
1 if x belongs to the rational number, or 0 if x belongs to the irrational number. सो इस फंक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं, डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं उसको। और ये फंक्शन बहुत ही स्ट्रेंज फंक्शन होता है जो कंटिन्यूस नहीं होता किसी भी पॉइंट पे, जो कंटिन्यूस नहीं है। ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, and also this function is not differentiable at any point on the domain. So कुछ इस तरह के स्ट्रेंज एग्जांपल्स भी हम इस कोर्स में देखेंगे। इस फंक्शन को हम ग्राफिकली भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे डॉटेड लाइंस होती हैं और नीचे एक्स एक्सिस पे भी डॉटेड लाइंस होंगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें हर रेशनल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और हर इरेशनल पॉइंट में इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ देयर आर सम particular example of functions, for example constant functions। constant functions क्या होते हैं, जो बेसिकली एक्स डोमेन के हर एक एलिमेंट को किसी एक फिक्स एलिमेंट में मैप करते हैं। जैसे f is a mapping from x to r। बेसिकली अब हम जितने भी फंक्शंस को लिखेंगे उनमें हम उसकी जो कोडोमेन है वो रियल नंबर लेंगे, क्योंकि ये रियल एनालिसिस का कोर्स है। उसमें जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम उसमें हम रियल वैल्यू फंक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो अब यहाँ पे हम थ्रू आउट दिस कोर्स में हम कोडोमेन को r लेके ही चलेंगे। सो इफ f is a function from x to r such that fx is equal to c, then this function is known as the constant function। and the domain of this function is x, and the range of f is the particular c, and codomain is r for this example। So and also if c is equal to 1 in this example, if c is equal to 1, then this function is known as identity function। Now in the next lecture we will study the natural numbers and the Bell ordering principle of natural numbers, and also we will study the in the next lecture we will study the principle of mathematical induction, and also some elementary properties of natural numbers and real numbers that we are studying in the high school in the high school classes. Now we prove them. Now we prove that analytically or rigorously we prove the those results that we are studying in the high school classes. So in the next lesson we will study those things. Thank you.